Adda247 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations, and we have succeeded to reach many who needed guidance and training. Extending our mission, we bring you unique video courses for banking and SSC exams. View, study and prepare anytime and anywhere. Now, government job in your pocket. Hi friends and welcome to the Hindu editorial analysis brought to you by Adda247. I am Saurabh Day. Well guys, कल था संडे और आज है मंडे और इन दोनों के जो फंडे हैं उसमें ये हुआ कि जो एडिटोरियल होता है वो आज आपको स्पेशल मिलने वाला है. So guys, today you are going to have a very special edition of the Hindu editorial analysis because we are going to cover the editorials of Sunday and Monday as well. तो वैसे बचपन में कहावत थी कि संडे हो या मंडे रोज खाओ वनडे, लेकिन अभी जो कहावत है वो ये हो गई कि संडे हो या मंडे दोनों के एडिटोरियल्स के फंडे आपको जरूर आने चाहिए. वेल सॉरी फॉर द बैड जोक. एनीवे गाइस, सो क्या करेंगे आज हम लोग? सो वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द एडिटोरियल्स ऑफ संडे एंड मंडे एंड नॉट ओनली दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न लॉट्स ऑफ न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स. ठीक है, अब इन दोनों के ट्यूटोरियल्स होंगे उससे हम लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो यू शैल इंप्रूव इन योर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, यू शैल इंप्रूव इन योर वोकैबुलरी एंड यू नो व्हाट, यू शैल आल्सो इंप्रूव योर पैरा जंबल. सो गाइस, इफ यू आर रेडी टू हैव अ फुल सेशन ऑफ फन एंड नॉलेज देन हियर वी गो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस ऑफ द आवर. The top headlines of the hour are right here for you. The first one is Hindustan Media Ventures quarter one net profit at 44.8 crore. तो बेसिकली देखा जाए भाई बहुत माल कमाया है हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स वालों ने. अब देखा जाए आफ्टर ऑल उनका जो क्वार्टर वन का नेट प्रॉफिट है वो आया है 44.8 करोड़ पे. फिर जो दूसरी बात है वो है करियर बेस्ट रैंक ऑफ 168 इन सिंगल्स फॉर राम कुमार. तो राम कुमार रामनाथन जो है इज अ टेनिस प्लेयर बाय द वे एंड यू नो व्हाट, ही हैज अचीव्ड हिज करियर्स बेस्ट रैंक ऑफ 168. आई होप ही थ्रोज अ पार्टी फॉर ऑल ऑफ अस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज महेश भूपति जॉइन्स हैंड विद ड्यूनामिस स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट. तो देखा जाए भाई ड्यूनामिस स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट ये वो कंपनी है जिसके साथ महेश भूपति जो है अब जुड़ चुके हैं. ओके गाइस, द नेक्स्ट वन इज डिज्नी विलन्स इमॉर्टलाइज्ड ऑन यूएस पोस्टल स्टैम्प्स. अब देखा जाए तो जो आपका स्नो वाइट है, राइट, स्नो वाइट हो गया एंड लायन किंग हो गया, इनके जो विलन्स हैं इनके विलन्स पे पोस्टल स्टैम्प्स निकाल दिए हैं यूएसए के पोस्ट डिपार्टमेंट में. सो गाइस, ऑल ऑफ दीज हेडलाइंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू हैवंट टेकन इट सो फार. तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको प्लीज. Now, I hope that you would have done it. Now, let's move forward to the first article of the day, and here it is. Well, lost in the numbers. Well, देखो क्या है lost in the numbers के बारे में. ये नहीं है कि ये जो आर्टिकल है वो मैथमेटिकल आर्टिकल है और आगे हम लोग DI की बात करेंगे या फिर जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनकी बात करेंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. I know a lot of you are weak in maths and you get lost in numbers. लेकिन ये जो lost in numbers है ये किसी और चीज के बारे में है, ये किसी और बेहद खास आर्टिकल के बारे में है. और ये जो आर्टिकल है वो एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू यूथ ओनली. आप लोगों को पता होगा कि जहां तक बात है स्किल्ड यूथ की, हमारी कंट्री में स्किल्ड यूथ जो है बहुत कम है, राइट, एंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज एक्चुअली रिगार्डिंग स्किल्ड यूथ ओनली. नाउ लेट्स टेक अ लुक. So July 15th, which also happened to be the World Youth Skills Day, the Skill India Mission celebrated second anniversary. अब देखा जाए भाई 15 जुलाई जो कि कह सकते हैं आप विश्व यूथ स्किल डे था.
और उस दिन को देखा जाए तो स्किल इंडिया जो मिशन है उसने अपनी दूसरी वर्षगांठ बना ली। ओके, सो गाइस, जुलाई 15th, which also happened to be the World Youth Skills Day, was actually, was the day when Skill India mission celebrated its second anniversary. Now, I think, guys, you should remember this date, July 15th, because it is what? It is the World Youth Skills Day, and also on this particular day, the Skill India mission anniversary is celebrated. Okay. Now, moving forward, the mission was the first Modi government's answer to the problem of picking up yet another idea floated by the previous UPA government and making it its own. अब देखा जाए भाई, तो अब भाई मोदी जी की जो सरकार आई है, मोदी जी की सरकार के पास देखो क्या है, सबसे बढ़िया जो मित्रों आपको पता है, कोई भी स्कीम हमारी हो या हमारी पिछली सरकार की हो, हमारी सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब लेवल लगा के उसको अच्छे से बढ़िया से सेल किया कि हर कोई खरीद सके मित्रों। अब बताइए, भला जो पिछली सरकार थी, स्कीमें तो उनके पास भी थी लेकिन आप खरीदते नहीं थे, तो हमने क्या किया, हमने भी कुछ उनकी स्कीमें उठाई और उस पर बढ़िया से लेवल लगा के उसकी मार्केटिंग करके मित्रों आपको बेच दिया। तो मित्रों पसंद आया कि नहीं, अच्छे दिन आ गए कि नहीं आए? एनीवेज, अब देखो क्या चीज़ है, तो मोदी सरकार ने क्या किया, ये जो आपका स्किल इंडिया मिशन था उनका, यूपीए गवर्नमेंट का, मतलब उसको भी उठाया, उस पर पैकेज किया, वापस रिपैकेज करके वापस मार्केट में भेज दिया कि एज इट्स ओन, यानी कि एज द वन बिलोंगिंग टू द इंडिया गवर्नमेंट व्हिच वाज फॉर्म्ड 2015. So guys, 2014. So what happened with this particular Skill India mission is that the Modi government, after coming into power, picked up a particular scheme, yet another particular scheme of the previous UPA government, labeled it, and then you know what, just floated it in the market as a scheme of the NDA 2.0. Now, the Manmohan Singh government had first floated the National Skill Development Council headed by former TCS Honko or boss S. Ramadurai. It had given him the rank of a cabinet minister. अब देखा जाए भाई, तो हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे, उनके भाई वो कम नहीं थे, उनके भी इरादे बहुत अच्छे थे, मतलब उनके इरादे नेक थे, और जो बाकी के उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि स्नेक थे, और कैसे स्नेक थे वो आपको पता ही है। एनीवे, तो खैर भाई मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था, मतलब उनकी गवर्नमेंट ने भी एक बहुत अच्छा आइडिया फ्लोट किया था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है भाई, अब ये जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल था, इसको कौन लीड करते थे, इसकी जो लीडर थे वो थे टीसीएस होंको या बॉस एस रामादुराई। ऑलराइट, अब देखा जाए तो एस रामादुराई ने इतनी बढ़िया से, मतलब सब कुछ सारी तैयारी वैयारी की थी, इतना बढ़िया सा काउंसिल बनाया था कि उनको जो है सीधे प्रमोशन देके एकदम कैबिनेट मिनिस्टर बना लिया गया था। ओके गाइस, सो द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट हैड आल्सो एक्चुअली, इट वाज द फर्स्ट वन टू व्हिच एक्चुअली फ्लोटेड द नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, एंड इट वाज एक्चुअली हेडेड बाय द टीसीएस होंको और बॉस एस रामादुराई. And perhaps the managerial skills of Mr. S. Ramadurai was so impressive that he was promoted to the rank of a cabinet minister. Okay भाई, I hope guys कि इतना दिमाग में बढ़िया से बैठ गया होगा। अगर बैठ गया है तो अच्छा ही बात है, अगर नहीं बैठा है तो कुर्सी चेंज करो दिमाग की अपनी, हम बता रहे हैं, इतना काम नहीं चलेगा इसे। खैर, अब आगे समझते हैं। अंडर द काउंसिल, the National Skill Development Corporation was set up as a public-private partnership, another first, and the corporation came up with a target for itself and some 22 central ministries which already had some form of skill development or training program running. अब देखो क्या चीज है, ये जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल था, ऑलराइट, इसका सेटअप किया गया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर, जो कि एक पब्लिक प्राइवेट किस्म की पार्टनरशिप थी, और ये एक बार फिर से पहली बार हो रहा था। साथ ही में ये जो कॉर्पोरेशन था ना तुम्हारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट वाला, ये कॉर्पोरेशन ऐसा था जो कि टारगेट लेकर आई थी अपने लिए भी, और साथ ही में जो सरकार की, जो भारत सरकार की जो 22 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज थे, उन सभी के अंडर के रिगार्डिंग इसने टारगेट तय किया था। और ये जो 22 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इन सभी में कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले से ही चल रहा था। Okay guys, so under this council of this your National Skill Development Council, thus National Skill Development Corporation was set up as a public-private partnership, all right, and it was also a first one. And the corporation which came up with a target for itself, that means for NSDC, and also with some 22 central ministries which already had some way or the other, which already had some type of the other type of skill development or training program already running or going on. Now, with an objective of skilling
500 million people by 2022, this would have made India's initiative the biggest such exercise in human history. और अगर देखा जाए तो जो एम था वो पूरा हो जाता तो तकरीबन 500 मिलियन लोग जो है 2022 तक हमारे इंडिया में जो है एकदम बढ़िया से स्किल हो जाते, और ये जो होता ये हमारे पूरे विश्व इतिहास में, विश्व के इंसान वाले इतिहास में एकदम पहला रिकॉर्ड होने वाला था. So guys, now with an objective, so with the actual objective of scaling 500 million people by 2022, this actually, this whole target would have actually made India's initiative the biggest such exercise ever in Indian or in human history. I hope guys कि इतना दिमाग में आपके बढ़िया से बैठ गया होगा. अगर बैठ गया है तो आप लिख सकते हो बैठ गया सर. Now let's take a look at question number 1, and here it is for you. Okay guys, so July 15th, which also happened to be World Youth Skills Day, the Skill India mission celebrated its second anniversary. The mission was the Modi government's answer to the problem of. Now guys, what is the correct answer? Your time starts now. 30 seconds. Hurry up. Come on. Everyone must try to give the answer. Come on, 20 seconds, guys. Okay, last 10 seconds left. I want all of you to open your account. सबका खाता खुलना चाहिए. आपका खाता भाग्य विधाता. Come on. 5 seconds more, guys. Hurry up. Come on. चलो 5 seconds और दे रहा हूं. Come on, guys. Hurry up. Give me the answer. Okay, so perhaps I can see a lot of tussle going on between 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4. Okay, तो कई लोग को लग रहा है 3 है, कई लोग को लग रहा है 2 है, कई लोग को लग रहा है 4 रहा है. भैया डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि आसान होगा. Okay, so please consider my bowling ability, because I do bowl, what do you say, full length block hole Yorkers on the first delivery itself. Alright, so well, the question was July 15th, which also happened to be World Youth Skills Day. The Skill India mission celebrated its second anniversary. The mission was the Modi government's answer to the problem of. Alright, up now see, option 1 is dropping yet another idea floated by the previous UPA government and making it its own. Option 2 is picking up yet another idea floated by the previous UPA government and labeling it as not its own. Then option 3 is taking yet another idea floated by the previous UPA government and making its own. Then option 4 is picking up just another idea floated by the previous UPA government and making it its own. Then option 5 is picking up yet another idea drowned by the previous UPA government and making it its own. Now, let's take a look at the correct answer, and the sahi jawab is, well, it's option number 3, guys. Option number 1, 2, 4 and 5. इनमें से कोई गलत नहीं है. The correct answer is option number 3. अब देखो भाई, ऑप्शन नंबर 1 is what? Dropping yet another idea was written, so that's wrong. Option 2 is wrong. Why? Picking up yet another idea floated by the UPA government and labeling it as not its own. ये लिखा हुआ है, so as not its own लिखा है. That's why option 2 is wrong. Option 4 is wrong. Why? Because picking up just another idea. It was given yet another idea and just another idea मतलब क्या? Yet another मतलब बहुत सारे हो चुके हैं और उनमें से एक, and just another means just the second one. Okay guys, so that's why option 4 is wrong. A lot of you got into technical glitch and gave me the wrong answer. So the correct answer is has been given by only those who were able to avoid or block this Yorker, and you know what, were able to place the ball. So guys, all those of you who chose option number 3, you have done a good job because that's the correct answer. तो जिनका भी खाता खुल गया बहुत बढ़िया बात है, जिनका खाता नहीं खुला बातें कम पढ़ाई ज्यादा करो. चलो, now let's take a look at the next part of the article. So targets unmet. Now that number arrived at from very poor data and deeply flawed or wrong assumptions was soon quietly dropped. अब देखा जाए मतलब 500 मिलियन के ऊपर, वो भी कब तक? 2022 तक. ऐसा लग रहा था जैसे मतलब
एक मतलब ऐसा है ना, मतलब सारे जितने भी लोग हैं जिनको ये 500 मिलियन लोग हैं जिनको ट्रेनिंग मिल रही है, लग रहा है जैसे सबके सब बाहुबली थे, मगर एक बार झटके में बोलेंगे जय माहेश्मती और एकदम जो है हाथी के रोकने के लिए रथ ले आएंगे बीच में। खैर, सो दिस एक्चुअल नंबर, ये जो पूरी कहानी थी, ये जो पूरा डेटा रखा गया था, जो टारगेट रखा गया था, इसको रखने में देखा जाए तो बहुत ही गड़बड़ झोल झाल वाले नंबर्स के लिए जिम्मेदार थे। और वैसे भी कांग्रेस का थोड़ा रिकॉर्ड रहा भी है झोल झाल करने के लिए नंबर्स में। एनीवे, तो देखा जाए तो झोल झाल था यहाँ के नंबर में, और साथ ही में जिस सोच के साथ ये टारगेट दिया गया था उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा ही झोल झाल हो गया था। ठीक है भाई, और इसीलिए फाइनली रियलाइज हो गया कि भाई देखा जाए तो ये भी जो ये है ना, अल्टीमेटली ये राहुल गांधी किस्म का डेटा है, तो इसको तुरंत जो है आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। एनीवे, सो दैट नंबर, यू नो, दैट प्रीवियस नंबर ऑफ 500+ million people for training them till 2022, you know, that was actually a number which was arrived due to very poor data and deeply flawed or wrong assumptions. And finally, Congress realized that this data is equivalent to Rahul Gandhi, and hence they dropped it. Anyway, but Rahul Gandhi hasn't been dropped yet. All right. Now, during the UPA years itself, you know what? The NSDC scaled back the target to a humble 10 million by 2020. All right. So what happened? मतलब एकदम 500 मिलियन तक रिकॉर्ड बनाने वाले थे, 500 मिलियन से गिरा करके 10 मिलियन पे ले आए सीधे सीधे। मतलब समझ गए कि भाई देखा जाए क्या कर सकते हैं। Now guys, what happened is during the UPA years itself, the NSDC scaled back the target to a humble 10 million. मतलब initially it was 500+ million, now it was 10 million by 2020, even as the center upped the project to the status of a mission. देखा जाए भले ही even though the UPA government, you know, even though they promoted this particular project to the status of a mission, still the NSDC reduced the target. All right, तो देखा जाए तो भले ही भाई जो है यूपीए सरकार ने प्रमोशन दे दिया इस पर्टिकुलर टारगेट को, एकदम मिशन एनएसडीसी कर दिया था, मिशन स्किल डेवलपमेंट कर दिया था, लेकिन तब भी एनएसडीसी भैया समझ गया कि देखो 500 मिलियन तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 10 मिलियन हो सकता है, सोच सकते हैं 2020 तक। All right, now then what happened? Post 2015, Prime Minister Narendra Modi, one of whose poll promises was to create 1 crore jobs, stepped up the ante or stake. All right, first the skill development portfolio was upped or promoted to the status of a full-fledged ministry with its own minister, secretariat. All right, अब देखा जाए भाई मित्रों, 2014 के बाद से आपके आशीर्वाद और वोटों के जरिए हमारी सरकार बनती है। हमारी सरकार में हमने यह वादा किया था कि हम 1 करोड़ जॉब जरूर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और यही देखते हुए, वही वादे पर जाते हुए, कसमें वादे खाते हुए, ताकि आप ये गाना ना गाएं कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, तो हमने क्या किया, हमने और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया, हमने और ज्यादा दाव बढ़ा दिए, और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया एनएसडीसी का। और फिर क्या था, फिर हमने स्किल डेवलपमेंट को सीधे प्रमोट करते हुए मिशन से सीधे मिनिस्ट्री बना दिया, और ऐसे मिनिस्ट्री बनाई कि उसमें मिनिस्टर भी था और सेक्रेटरी भी था, वगैरह वगैरह, बाकी के कुछ फालतू लोग भी थे। Anyway, so guys, what happened post 2015 after the Prime Minister Narendra Modi government took place, actually it came to power, what happened is initially the Prime Minister Narendra Modi's, voting pitch was that it is going to create, that he was going to create 1 crore jobs. So when actually he became the Prime Minister, what happened? He actually stepped up the ante or stake. In fact, he promoted and he put a lot of pressure, and perhaps he promoted a lot of idea of this particular skill development. And first what he did was, he actually promoted the status of skill development portfolio to that of a ministry level. And finally, he also gave it a particular minister and secretary and etc. So I hope guys कि इतना दिमाग में बढ़िया से बैठ गया होगा। अगर बैठ गया है तो आप लिख सकते हो बसला सर। अब आगे समझते हैं। A year later, he revamped or renovated the National Skill Missions, a special scheme with the PM's own imprimatur or permit on it. The Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana was launched with the status of a flagship or a leading scheme, which meant adequate budgetary support. अब मित्रों देखा जाए तो हमने देखा कि 1 साल उस मिनिस्ट्री को बनाने के बाद भी जितनी ज्यादा एफर्ट की जरूरत थी वो नहीं हो पा रहा था। तो हमने क्या किया, हमने फिर एक और कोशिश करी,
हमने उसका सारा हुलिया चेंज कर दिया और साथ ही में उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया ठप्पा लगा दिया। उस ठप्पे का नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब यह जो कौशल विकास योजना था, ये एक लीडिंग स्कीम, यानी कि ऐसी स्कीम जिसको बाकी सब लोग फॉलो करें, तो मतलब इतना बढ़िया कर दिया। और साथ ही में देखो, लीडिंग स्कीम बनाने में बहुत बड़ा जो हमारा एक रीजन था, उससे हमारे पास योजना तो थी, मिनिस्ट्री भी था, लेकिन पैसे कम पड़ रहे थे। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बनाने के बाद हमने उसमें अच्छे से प्रॉपर अलॉटमेंट भी कर दिया। तो उससे आप सभी का, हम सभी का विकास साथ में होने लगा, सबका साथ सबका विकास। Anyway, so guys, what happened? Years later, after forming the Ministry of Skill Development, Mr. Prime Minister once again renovated the National Skills Mission, and actually a special scheme with the Prime Minister's own imprimatur, that's your permit by the way, on this particular scheme. Then the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana was launched, and this was actually given the status of a leading scheme, which meant adequate monetary and budgetary support. All right, so they were given proper money allotment to this as well. Now, with all this and with the Modi government's focus on execution, one would have thought that we would have been well on the way to achieving, if not the UPA's initial hyperbolic or exaggerated targets, at least part of the more realistic targets set later. तो ऑब्वियस है भाई, जब मोदी जी ने जो है इतना ज़्यादा वहाँ पर एफर्ट्स किए और साथ ही में उसको प्रॉपरली एक प्रैक्टिकली तरीके से उसको जो है प्रमोट किया, तो सबको ये ऐसा लगने लगा कि भाई भले ही 500 मिलियन तक ना पहुँच पाए, लेकिन तब भी कम से कम उसके आधे तक जरूर पहुँच सकते हैं और उतना हम लोग अच्छे जरूर अचीव कर ले जाएंगे. सो परहैप्स अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ होप्स रिगार्डिंग दिस थिंग दैट परहैप्स even if we are not able to achieve the exaggerated target given by the UPA government, still we would be able to achieve half the number. All right, then what happened next? To read that, you'll have to click on the editorial PDF link given in the description of the video and read the editorial article of 16th of July. All right guys, now it's time to take a look at question number 2. और वो सभी मित्र हमारे भाइयों बहनों जिनका खाता नहीं खुल पाया था, उनके खाते को खोलने के लिए बहुत बढ़िया मौका आया है. आइए देखते हैं सवाल नंबर 2, खाता खोल दो. Anyway, so which of the following is true according to the passage? तो guys, क्या लगता है आपको इन 3 स्टेटमेंट में से कौन से सत्य हैं पैसेज के हिसाब से? Your time starts now. 30 seconds. Hurry up guys. $20 seconds more guys, quickly. I don't know Amit Kumar की रील क्यों पे क्यों अटक गई है. 10 seconds more guys, come on, give me. Quickly answer. Okay, 5 seconds more guys, hurry up, come on. देखो सबको जवाब देना है, डरो मत, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो come on, don't fear. All right, so perhaps अब देखा जाए तो डर खत्म होके लोग एकदम धनाधन आंसर दिए जा रहे हैं और बहुत जल्दी आंसर आ रहा है, ये देख के मुझे बहुत खुशी है. Now, well, देखो क्या है. Statement A was the number arrived at from a very poor data and deeply flawed assumptions was soon quietly dropped. B was post 2014, Prime Minister Narendra Modi, one of whose poll promises was to create 1 crore jobs, stepped up the ante. And option C was a year later, he revamped the National Skills Mission. Alright, so guys, these were your statements and the correct answer is... well, it's option number 4, that means only A and B. तो वो सभी लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ option number 4 को लगाया था as the correct answer, they have done a good job because that is the correct answer. देखो C जो है, C is wrong. Why is that? Because a year earlier, it's given a year earlier he revamped the National Skills Mission, and that's wrong. It should have been a year later. ठीक है भाई? तो क्या anyways, I hope guys that you were able to get statement A and B as the correct answer, and you also gave question number 4 as the correct answer. और साथ में आपका जो स्कोर होगा वो 2 on 2 जरूर पहुंच गया होगा. If it's not 2 on 2, even 1 on 2 is also a very beautiful score, and I can see a lot of people who have just joined us and even they have scored 1 on 1. That's really very good. Now let's take a look at the next very important article of the day, and before we do that, let's take a look at the other articles for review of 16th July. So the other articles of review
for review for 16th of July 2017. The first one is no humor please, we are Indian. तो perhaps आप जानते ही हैं recently some guy some comic guy got into trouble because of perhaps applying some kind of special filters on the Prime Minister, and this article actually is regarding that. No humor please, we are Indian. The next one is Freedom's Echo Leila Story. अब देखा जाए भाई ये जो एक एक्चुअली एक पर्टिकुलर बुक है, उस बुक के अंदर का एक रेंडिशन है तो उसको यहां पर लिखा गया है, उसका रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, फ्रीडम्स एको लेला स्टोरी. द नेक्स्ट वन इज लुकिंग एंड सीकिंग. वेल दिस एक्चुअली इज रिगार्डिंग ट्रैवलिंग. परहैप्स एक बहुत फेमस कहावत है that the world is a book and the people who don't travel have just seen the first page. Okay guys, so this particular article is regarding that, but I think from for you guys जो आर्टिकल मैंने अभी पिक किया था, that is the most important, and if you want to read one more article for yesterday, that should have been no humor please, we are Indian. Now let's take a look at the other very important article for today, and it is cash is not trash. भाई देखो क्या है, इसमें डेट नहीं पड़ी क्योंकि ये आज का आर्टिकल है. सो कैश इज नॉट ट्रैश. देखा जाए तो हमारी जो सरकार है आजकल, उनका जो मतलब मिजाज है वो कैश पे कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, क्योंकि वो ज्यादा चाहते हैं कि हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ही करें. सो कैश लेकिन देखा जाए तो कोई कूड़ा नहीं है. ऑलराइट, सो कैश इज नॉट ट्रैश, ये आर्टिकल उसके ऊपर आधारित है. लेट्स सी व्हाट्स रिटन इन दिस आर्टिकल. Okay, a public sector bank is the latest to join hands in the war against cash. A report released by the State Bank of India last week states that thanks to demonetization, India has seen a huge increase in digital payments using cards. अब देखा जाए भाई तो हाल ही में एक सरकारी बैंक ने क्या किया है, उन्होंने भी कह सकते हैं आप हाथ जोड़ नहीं लिए हैं. उन्होंने भी जो जंग है कैश के खिलाफ उसमें अपना योगदान देने का फैसला कर लिया है और साथ ही में उससे जुड़ने का फैसला कर लिया है. देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट सामने बेसिकली रिलीज की थी पिछले हफ्ते. सो लास्ट वीक तो पिछले हफ्ते एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने जो है एक रिपोर्ट सामने लाई थी एसबीआई, और उसने ये कहा था कि डीमोनेटाइजेशन के जरिए और इसकी वजह से डिजिटल पेमेंट्स का बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसमें लोग जो है कार्ड ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं. और जिनका भी एसबीआई में खाता होगा उनको वैसे भी पता होगा कि वहाँ के जो मतलब स्टाफ मेंबर होते हैं, ज़्यादातर, सब नहीं कहूँगा लेकिन ज़्यादातर जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो वैसे भी कस्टमर की शक्ल देखना पसंद तो करते नहीं है. तो कार्ड में जाकर ट्रांजैक्शन हो जाए तो ये उनके लिए भी अच्छा ही है और कस्टमर के लिए भी अच्छा ही है. जस्ट ह्यूमरस, no offense to SBI guys. Anyway, so a public sector bank recently joined hands with in the war against cash, and that particular bank was State Bank of India, which last week stated it actually brought out a particular report which stated that due to demonetization, India has seen a huge increase in digital payments using cards. All right, now, well, India has seen, okay, then what happened? If not for demonetization, it says, the economy would have taken 3 more years to achieve the level of digitization that it has since November. अब देखा जाए भाई तो SBI की उसी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर विमुद्रीकरण नहीं होता, अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो क्या होता? तो ऐसा होता कि जिस लेवल पर हम लोग अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कार्ड के जरिए मतलब नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये लेवल लगभग 3 साल के बाद ही आता. All right, so perhaps what SBI now, what more was written in that particular report is that had demonetization not happened, then the level of transaction and the level of non-cash transaction that we are actually using right now, or we are perhaps going through right now, would have been achieved only after 3 years from November. Now, the underlying logic is that citizens are somehow irrationally obsessed or captivated with the use of cash, and hence the enlightened officials in the government are duty bound to wean or detach them of it, even if it requires administering crucial shocks like demonetization. अब देखा जाए तो मतलब perhaps तो देखा जाए यहाँ पर जो आपका demonetization है, इनफैक्ट ये जो पूरा अभी हमने इस रिपोर्ट को देखा, SBI का जो रिपोर्ट था, हम ये समझ सकते हैं इस रिपोर्ट से कि भारत के जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको कैश कुछ ज़्यादा ही प्यारा है और मतलब अजीब किस्म का नाता है हमारे और हमारे कैश के बीच में. खैर, अगर हमारे हाथों में अच्छे नए नोटों की गड्डी आ जाए तो उसके बाद कितना अच्छा नाता और कितना अच्छा लगता है कुछ समय के लिए, मतलब मतलब एकदम ताजमहल बना लिया हम लोगों ने छोटा वाला अपने स्टाइल के लिए. एनीवे, तो कहते हैं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया किस्म का फीलिंग होती है इंडियन पब्लिक और इंडियन कैश के बीच में, और इसी रिश्ते को, इसी प्यार के बीच में दरार बनने के लिए अक्सर
हमारी भारतीय सरकार को बार बार विमुद्रीकरण करना पड़ता है और जबरदस्ती हमारे उस कैश को हमसे छीनना पड़ता है. इनफैक्ट यू नो व्हाट, so the underlying report or the underlying logic behind this particular report of the State Bank of India is that Indian people are excessively obsessed or captivated with the use of cash, and that's why the enlightened officials of the government are perhaps totally duty bound to wean or to detach, of them of it, even if it requires administering or perhaps giving or just sending cruel shocks like demonetization. Okay guys, so I hope कि अब तक आप बढ़िया समझ चुके होंगे. Okay, अब आगे समझते हैं, आगे देखते हैं. Note that this now it is unanimously agreed by experts that a cashless world offers many undeniable benefits. अब देखा जाए भाई तो देखो इस बात को कोई मना नहीं कर सकता और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही मानते हैं कि अगर हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है फायदा ही फायदा होने वाले हैं. सो नोट दैट it has been unanimously agreed that by experts that a cashless world offers many undeniable benefits. Now in a world where all or at least most transactions are digital, the government would be able to track any transaction. अब देखो क्या है ना कि let's just say एक ऐसी दुनिया जहां पर सब कुछ जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या फिर कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, सरकार जब चाहे तब किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वहां पर ट्रैक कर सकती है, उसको ढूंढ सकती है. So perhaps in a world where all or at least in fact most of the transactions or at least most of the transactions are digital, the government will be able to track any particular transaction whenever it wants and it will be on its will. Now this would help prevent tax evasion, thus increasing tax revenue and also help in dealing with the criminal transaction. अब देखा जाए भाई, so when there will be cashless transaction, then two of the benefits that can be counted easily are, the first one is there will be no tax evasion, and the second one is whenever criminal transactions will take place, then they will be dealt with strictly. Alright, तो देखो भाई दो बहुत बड़े फायदे हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन के. पहला फायदा ये है जो टैक्स की चोरी जो करना चाहते हैं, हमारे यहाँ जो ऐसे लोग हैं जो मतलब ऐसा चाहते हैं कि उनको जितना भी अमाउंट मिले, जितना भी अमाउंट वो कमाए, फिर भले ही वो ऑन द टेबल हो, अंडर टेबल हो, बिसाइड टेबल हो या ओवरहेड हो या किसी भी एंगल से हो, तो उसमें से लेकिन उनको 2% भी टैक्स न देना पड़े, ऐसे जो लोग हैं उनको बहुत जोरदार पकड़ के सरकार जो है उल्टा करके टंगड़ी चिकन बनाने वाली है उनका. ठीक है भाई, तो ये बहुत फायदा होने वाला है यहाँ पर कैशलेस ट्रांजैक्शन का. और दूसरा जो फायदा है, जितने भी ये आतंकवादी संगठन हैं जो कि आपस में हवाला और ये आला और वो आला करते रहते हैं भाई, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको प्रॉपर्ली ट्रैक किया जा सकेगा और जितने भी ये लोग कांड करने चाह रहे हैं उन सभी कांड से पहले ही इनके साथ जो भी होगा वो कर दिया जाएगा. नाउ आई होप गाइस कि इतना आपके दिमाग में बढ़िया से बैठ गया होगा कि यहां पर किस चीज की बात हो रही थी, और अगर बैठ गया है तो आप लिख सकते हो बसला सर. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट्स द रॉयल रंबल पैरा जंबल. वेल हियर इट कम्स फॉर यू. So guys, now this is a 7 sentencer for you. I hope कि आज ये जो 7 sentencer है इसको आप जरूर बना सके. You got 90 seconds. Your time starts now. Hurry up guys. Come on. Just 75 seconds left, guys. Come on. Give me the arrangement. Hurry up. Last 60 seconds, guys. Hurry up. Come on. Give me the arrangement. Okay, 45 seconds more, guys. Come on, give me the answer quickly. Okay, Shivani is the first one to reach almost more than the half of it. Well done, Shivani. Well, we have reached 30 seconds and I can just see just a single arrangement so far. Come on, guys, it's not that tough. Try. Okay, Pratap has made it. Well done. Okay, Kehkasha Bano says not visual properly. Kehkasha Bano, you are trained enough and you are talented enough to change the resolution. Please do that. Then I think some people also have made it. Jilmit has made it. Rajan, Shivani, well done guys. Mohammed Basit, Rajneesh, Vidya, Hussain, very good.
Come on, guys. I'm going to give you 5 seconds more. Time up हो रहा है. Come on. I'm going to give you 5 seconds more. Well done, Seema. Okay, well, the time is up, and I think now I can see a flood of para-jumble arrangements from the students. Now, this flood is something that I love. अच्छी बात है कि आप सभी लोग जो है कोशिश कर रहे हैं. All of you are trying your well, trying your best. That's good thing to see. Now, let's take a look at the correct arrangement, and it is, well, it's DCB EF. Okay, this is DCB FEAG. Alright, तो जो अरेंजमेंट है वो है DCB FEAG. Okay, so that's, I hope कि आपका जो अरेंजमेंट है वो यही होगा, which is DCB FEAG. ठीक है भाई, तो AGOG बन गया जी. बहुत बढ़िया बात जी. अच्छा सुनो, और all of you who have got all of this correct, यानी कि जिनका अरेंजमेंट पूरा सही बन गया है, they can give themselves 1 mark, and I hope that takes your total score to 3 on 3 for sure. And let's just say if you were able to get around 6 करेक्ट, मान लेते हैं कि अगर आपके 6 सही बन गए या फिर 5 सही बन गए, then you can give yourselves half marks. ठीक है भाई, तो जिनका भी 5 या 6 सही बन गया है, they can give themselves half marks. Okay guys, now let's take a look at the next part of the article. Okay, so what is ignored is the fact that when the government cracks down on preferred methods of transactions among citizens, the result is a net income loss to society. अब देखो क्या चीज है, जब सरकार जो है, जब भी ऐसा होता है कि सरकार जबरदस्ती के मारे किसी भी ट्रांजैक्शन के तरीके या जरिए के ऊपर जो है हमला बोलती है या धावा बोलती है, तो उससे जो आम सिटीजन्स हैं, उनकी जो सोसाइटी है, उसको एक वित्तीय घाटा झेलना पड़ता है. Now, what is something that has been ignored for long is that whenever the government cracks down or attacks on a preferred method of transaction among the citizens, the result is actually an economic loss to the society. Now, after all, it is not some superstition or false belief that holds back citizens from using digital cash. अब देखो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मान लो एकदम अंधविश्वास है जिसकी वजह से लोग सिर्फ कैश इस्तेमाल करना ही पसंद करते हैं, ना कि डिजिटल कैश. So perhaps you know what, it is not some kind of a superstition that something bad will happen, that because of which the common citizens use in fact actual cash and avoid using or use less digital cash. Instead, there are often some good economic reasons for them to choose to deal in cash over other forms of money. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई कैश से डील करना ज्यादा अच्छा होता है compared to other forms of money. So, most of the time, in fact, many of the time, it's better for the people, for the common people, to deal with good economic reasons, to deal in cash for good economic reasons compared to other forms of money. All right, now, the low value transactions. For one, physical cash often offers the easiest and the cheapest way to deal in many low value transactions. देखा जाए भाई, तो जो physical cash है, यानी कि बेसिकली जो कैश के नोट्स हैं, गड्डियां हैं, वो सबसे आसान तरीका होता है और सबसे बढ़िया इनफैक्ट मंदा तरीका होता है जब भी हम लो वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं. तो अब देखा जाए भाई, तो पेटीएम बहुत फेमस चल गया था जब लोगों के पास छुट्टे नहीं थे या 100 इनफैक्ट 500 तरह के नोट कम जो है बैन हो गए थे. लेकिन अब मान लो कोई शू पॉलिश करने वाला है, और शू पॉलिश करने वाले के पास तो पेटीएम नहीं है. इनफैक्ट मैं जितनों को भी जानता हूँ वो तो अभी भी वही नोकिया 3310 इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वो भी जो है इसको एकदम बढ़िया रबर बैंड लगा के. अब देखा जाए तो उसके पास आप क्या करोगे, उसको तो आपको 10 रुपए देने ही पड़ेंगे, उसको तो आपको टूटे देने ही पड़ेंगे. तो ये जो छोटे छोटे वैल्यू के ट्रांजैक्शन है, इनके लिए आमतौर पर लोग जो है प्रेफर करते हैं कि वो कैश में ही डील करें. सो परहैप्स whenever you talk about small, whenever you talk about low value transaction, then it is preferred that you use physical cash. All right, now it might, for instance, make no economic sense at all for small businesses to build the infrastructure required for digital payments or for poor households to pay the price for it. अब आप ये समझो कि जो बेचारा मोची है वो लोगों के जूते साफ करेगा, लोगों के जूते सही करेगा, या उनका जो है मतलब जो भी चीजें होंगी वो उसको करेगा, या फिर अब वो सारे दिन कार्ड स्वैपिंग की मशीन समझता रहेगा, राइट? सो ट्राई टू बी प्रैक्टिकल इन दिस, सो परहैप्स somebody who's actually a cobbler, will he try to earn his living, or is he going to get involved in considering or perhaps understanding the various ways of using a particular card machine, right guys? Now many businesses and consumers might automatically adopt digital technology as its costs drop. अब देखा जाए तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना भी हमेशा उतना आसान नहीं होता है. कई बार ऐसा होता है कि भाई इट इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली. सो लेट्स जस्ट से
दैट व्हाट यू से, लेट्स जस्ट से कि अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो पेमेंट है या जो कॉस्ट है इनकर होता है उसमें, अगर वो थोड़ा सस्ता हो जाए तो इट इज वेरी इट्स गोइंग टू हैपन वेरी वेल एंड वेरी सून कि जो भी आम बिजनेसेस होंगे, जो भी आम कंज्यूमर्स होंगे, वो उसी को इस्तेमाल करना पसंद करेंगे. सो गाइज, मेनी बिजनेसेस और कंज्यूमर्स माइट ऑटोमेटिकली अडॉप्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी एज इट कॉस्ट ड्रॉप. Now, for example, आप लोगों को पता ही होगा that whenever you use card transactions, many shopkeepers don't want you to, they charge you a little more. All right, तो कई बार ऐसा होता है कि कैश ट्रांजैक्शन के लिए आपको ज़्यादा चार्ज किया जाता है. Sorry, whenever you go through a card transaction, you are actually charged more many a time, not every time, because now that's because there's some kind of tax attached with it as well, and that has to be paid by the guy who uses a tax machine, or in fact who uses that particular card machine. So that's the reason, so that particular POS machine, now if it gets cheaper, I am sure that all of us, will be more inclined towards getting digital payments and digital transactions. Now, forcing them to prematurely or early adaptation of technology will only be harmful to their interest. अगर अब मान लो सब पे जो है एकदम हम सबकी गर्दन पकड़ के सबको बोले कि नहीं तुम्हें करना है तो फिर पीओएस का मशीन ही यूज करना है. अब बेचारा कॉबलर का आप गर्दन पकड़ के उसको बोलो कि तुम्हें पीओएस मशीन ही यूज करना है, वरना नहीं बैठोगे, वरना तुम नहीं कर सकते हो अपना काम जो कर रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना. सो यू कैन नॉट होल्ड द कॉलर ऑफ अ पर्टिकुलर कॉबलर एंड टेल हिम और फोर्स हिम टू यूज ओनली पीओएस मशीन बिकॉज you want your India to get, you want India to get, in fact, our India to get digital, right? So that's why we'll have to get the proper infrastructure first, and only then we can push this thing. Now, guys, let's take a look at the next question, and this is actually extremely exciting for you. Well, here it is. So what is the theme of the passage, guys? क्या लगता है आपको कि अब तक जो हमने समझा, अब तक जो हमने पढ़ा, theme of the passage क्या है उसके हिसाब से? You got 30 seconds. Time starts now. Hurry up, guys. Come on. Have you answered, guys? Just 20 seconds left. Come on, answer quickly. सबने कर दिया आंसर, 10 सेकंड बाकी है. कम ऑन गाइस. And it's 3, 2, 1. Time's up. So a lot of people are scared of finding a theme of the passage. कई लोग जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं थीम ऑफ द पैसेज. भाई देखो क्या है, as of now you can take the risk because इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे एग्जाम में. ठीक है भाई. So as of now you can take the risk, and as of now you can find the theme of the passage so that you get good practice in finding the theme of the passage. But let's just say if you don't practice right now and you have to give the answer for this in the examination, then you will be in deep trouble. So better practice this right here. So what is the theme of the passage? Now see, option 1 is cash is bad for transaction. Alright, is that the correct one? Option 2 is digital transactions will be more in 3 years. Option 3 is the impact of demonetization. Option 4 is cash transactions for small amount. And option 5 is tracking criminal transactions. Well, the correct answer is, well, I think it should have been option 3. And it has not got updated. I'm sorry for that. Cash is bad for transactions is not the theme of the passage. It is option number 3, the impact of demonetization. The entire passage was actually about the impact of demonetization from the starting of it. देखा जाए तो शुरुआत से लेकर एंड तक हम लोग मेनली जो भी बातें कर रहे थे वो विमुद्रीकरण के असर की वजह से ही बात कर रहे थे. Whether it was the SBI report, whether it was that cobbler situation, whatever it happened, this was all because of the effect or the impact of demonetization, and that's why option 3 is the correct answer. अब देखा जाए तो cash is bad for transaction का ऐसा हमें प्रॉपर कहीं मिला नहीं. दूसरी बात यह है कि digital transaction will be more in 3 years was something that was a part of SBI report. It would have been more in 3 years. Then option 4 is cash transaction for small amount. अब देखो ये जो चीज है ये सिर्फ जो है लास्ट के पार्ट में ही विजिबल था. Then option 5 tracking criminal transaction was actually given in somewhere in one of the previous slides, but the correct answer is option number 3,
the impact of demonetization. So all those of you who chose option number 3, you have done a good job because that gives you the correct answer. I hope कि आपका score 4 on 4 जरूर पहुंच गया होगा. If it's not 4 on 4, even 3 on 4 and around is also a very good score. So that was all from this article. You want to know more, you want to read more, click on the editorial PDF link, free editorial Hindu editorial PDF link given in the description of the video. But now it's time for a very special section that not only brings a smile on your face, not only cheers you up, but also increases your overall score in today's Hindu editorial. And that section is, well, it is the vocab quiz. So guys, are you ready for the vocab quiz? Are you ready to improve your score? Are you ready to smile again? And are you ready to get cheered up once again? All those of you who agree, give me a stone cold style hell yeah. HELL space YEAS. So do you agree? Are you ready for the vocab quiz? And hell yeah, a lot of hell yeahs. Well, let's take a look at question number 5. So what's the synonym for the word honko from the given options? Your time starts now. 15 seconds, go. Five seconds left, guys. Hurry up. And the correct answer is, well, it's option number 4, chief. Yes, we discussed honko, we discussed the meaning of it, and the synonym of it is chief, guys. So it's not employee, it's not worker, it's not servant, it's option number 4, chief. Now question number 6 coming here for you. So what's the antonym of the word imprimatur? Come on, guys, 15 seconds, go. Last 5 seconds, go. And the answer is, well, it is option number 2, prohibition. Now, imprimatur actually meant permit or permission. So that's why its antonym is prohibition, guys. I hope कि आपका score लगातार बढ़ रहा होगा. Now, moving on to the penultimate question, question number 7. So guys, what's the synonym for the word wean from the given options? You got 15 seconds, go. Hurry up, guys. Just 5 seconds left. Go. Well, the answer is option number 3, halt. Now see, wean meant to get attached, alright. So perhaps, I'm so sorry about that. Now see, wean meant to get detached, alright, or get away. And when you compare it to the option, option 1 was attached, option 2 was apply, option 4 was join. Now all of these were perhaps around more getting the antonyms, but the correct synonym for the word wean, comparing the options, would have been option number 3, halt. So guys, that was not all, but now we are going to face the question number 8, which will be the full and final question of today's Hindu editorial session. And I hope with that score, you get the majority of the answers correct. And the last question is, so what's the correct antonym for the word obsessed from the given options? You got 15 seconds, go. Come on, guys, just 5 seconds left, go, come on. And the correct answer is, well, it's option number 4, disenchanted, guys. Now see, obsessed meant captivated or dominated or haunted, but the only antonym for this was disenchanted. I hope, guys, कि आपके जो majority answers थे वो सही हो गए होंगे, and you would have scored 8 on 8 for sure. If it's not 8 on 8, even 6 on 8 and around is also a very, very nice score. In fact, all those of you who joined us late but ended the show with the accuracy of 70% or more, you guys are the real winners of this particular show. Alright, so do watch it again and again and daily from Monday to Friday at 6 p.m. Now let's take a look at the other articles for review of today's date. Well, the other articles for review of on 17th of July 2017, the first one is the past
catches up. Now, this is regarding the extrajudicial killings. So, this article is regarding that one. And the next one is back to the classroom. This is because this is actually based on evidence-based policing. So, that's what this article is about. The next one is a looming threat. Now, this is also a very interesting article. Perhaps you should read this. Next one is changing contours of the Darjeeling agitation. Now, this is regarding the Darjeeling situation, which is getting actually bad to worse every passing day. The next one is when too much is too little. This is regarding the wastage of food that takes place despite being a country which can provide enough food for all the nations. In fact, around it, still we have got around 14 to 16 crore people who sleep hungry every night. So what is the importance of the food, wastage of food? This article is regarding that. The next one is readers are our mirrors. Now, this is actually an article from a journalistic point of view. So I'll say, for you, the article that I picked up, this was the most important article, and along with it, if you want to read one more article, then you must go for when too much is too little. So guys, that was all from today's session of the Hindu editorial analysis. I hope that you had fun. You were able to get to grab on the points of current affairs. You're also able to get some very important vocabulary words. You were also able to practice comprehension-based question, and you also had fun with the para-jumble. So that was all from me at Adda247. Don't go anywhere because we have got a lot of stuff lined up for you, and keep watching Adda247. And remember that with us, government job is right there in your pocket. Good night, Shubh Ratri, Shabba Khair. Adda247 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations, and we have succeeded to reach many who needed guidance and training. Extending our mission, we bring you unique video courses for banking and SSC exams. View, study and prepare anytime and anywhere. Now, government job in your pocket.